बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के लिए कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं 2023-24 के लिए। तो वीडियो में आखिर तक साथ रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है, जो कि साइंस, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें आपके साथ हम इंशाल्लाह यहाँ डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनमें नंबर 1 है व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज़ असेंबली लैंग्वेज, डिफाइन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, how secondary storage is different from primary storage, differentiate between application software and system software, define impact and non-impact printer, what is information technology, how cache memory is different from RAM, what is the importance of operating system, define functions of control unit, what is port and barcode reader, define any two scanning devices, what is digital computer and draw its block diagram, why ROM is called non-volatile memory, differentiate between hard copy and soft copy। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा ख़ास नहीं है। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वाइज, व्हाट इज़ ब्रिज, व्हाट इज़ ईमेल, राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस, व्हाट इज़ स्विच, डिफाइन लैन, गेन एंड वैन, आल्सो इट्स कंपोनेंट्स, डिफाइन टोपोलॉजी एंड इट्स टाइप्स, how can computers useful in medical science, differentiate between router and gateway, write any 4 abuses of internet। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सप्लेन बेसिक लॉजिक गेट्स विद डायग्राम। जो लॉजिक गेट्स हैं सारे, ठीक है, उनको डायग्राम के साथ आपने एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट टाइप्स। चैप्टर नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उसमें व्हाट इज डुप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स, व्हाट इज बेसिक हार्डवेयर फॉर इंटरनेट, define communication and its types, define analog and digital computer, what is ASCII and EBCDIC, which layer of OSI is responsible for routing information between computers, what is protocol and its types, define the term bandwidth, define OSI, name any 2 full duplex devices, write the purpose of modem। लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आपके पास है वो राइट अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है इसका डिटेल में आपको जो है वो पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा वगैरह। डिफाइन OSI इन डिटेल, व्हाट इज़ माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट, डिफाइन कम्युनिकेशन इन डिटेल। चैप्टर नंबर 4, इसमें जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, उसमें कंप्यूटर कम्युनिकेशन आपको पता होना चाहिए, सोशल मीडिया क्या है, उसके अब्यूजेस, उसके यूजेस वगैरह आपको पता होने चाहिए, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, और उसके साथ साथ 4 पॉइंट्स टू शो द ई कॉमर्स इज एडवांटेजेस इन मॉडर्न बिजनेस। चैप्टर नंबर 5 में शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है why address bus is unidirectional, what is Boolean algebra, define stack, define bus and its types, what is computer register and its types, what is CPU register, why data bus is called bidirectional, what is instruction cycle with also drives diagram, what is data processing cycle, write its steps with the help of diagram।
लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास जो है वो रजिस्टर का पता होना चाहिए, आपको डिटेल में इसके बारे में बसेस का पता होना चाहिए डिटेल में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर और डिफाइन सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट्स इन डिटेल। चैप्टर नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें आपके पास जो है हाउ वायरस इज ट्रांसफर्ड, लिस्ट द बेनिफिट्स ऑफ कॉपीराइट, what is copyright law, what is computer viruses, why we need to keep antivirus updated, what is computer crime, what is virus and how we served for virus, how can we prevent our computer from viruses। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास है what is computer crime, what is software piracy and also phishing, state copyright law, what is computer virus, explain its different types। चैप्टर नंबर 7, इसमें आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद CLI और GUI क्या चीज़ है ये पता होना चाहिए आपको। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता होना चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन वाइज। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई ऐसा खास नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास है राइट अबाउट बिजनेस यूज ऑफ MS वर्ड, व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर। चैप्टर नंबर 9 में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो MS एक्सेल जो है उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, खास तौर पर अकाउंटिंग और बिजनेस यूज उसका क्या है ये पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 10 में शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास है व्हाट इज सर्च इंजन and its types, what is website address, what is internet browser and its types। तो ये था आपका कहना चाहिए कि फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, टारगेट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन वाइज। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।